Okay, Nidhi, we are going to start your snap interview for the post of assistant professor in BPSC. Yes, sir. So my first question is, which theories are based upon the hybridization? Sir, which theory? Which theory is based on hybridization? Okay. Sir, the concept of hybridization has been used in various theories like VSEPR theory and in the chemical bonding, basically. Can you tell me the full form of VSCPR? So VSEPR is valence shell electron pair repulsion theory. Uh, should I explain this? Yes. Okay. So in this VSEPR theory, we have the atoms have their outermost orbital. The electrons in the outermost orbital, they undergo hybridization to form hybrid orbitals, which basically undergo chemical bonding and they form molecule. Can you tell me about the physical interactions that occurs between the molecules? Physical interactions. Yes. For example, what kind of physical interaction? That you tell. Okay, what are the defects? What type of defects we can observe in the solids? Yes, sir. We can observe point defect when there is the when in a perfect crystalline solid we find a defect at a point where some atom is dislocated or there is some vacancy. This is point defect, and like Schottky defect, Frankel defect. Uh, What is difference between this Schottky and Frankel? so when a crystalline solid has when there is a so in a crystalline solid we have that cation and anion. So the generally the size of the anion is bigger as compared to the cation. So if the cation is dislocated from its original position, it is called Frankel defect. And the Schottky defect, when a pair of cation and anion is removed from the crystal, it is called Schottky defect. What are the consequences of this defect? So as a consequence, overall the electrical neutrality of the compound is maintained, but Okay. in the Schottky defect there is a decrease in density due to the like removal of one pair of charged cation and anion. But in the Frankel defect there is no difference, but it generates one uh, center of like colored center. What are rare earth elements? The rare earth elements are the elements which are like present in very less amount, and they are like lanthan rare earth. So lanthanide actinide है क्या? आप बताइए. Okay, which block of elements in the product table has a maximum oxidation state? Sir, oxidation state variable, like maximum oxidation state is shown by the transition elements. Basically, osmium exhibit +8 oxidation state due to the like very low difference in the ionization energy of the electrons in the d orbital, n-1 d orbitals. Metals exist as a crystalline solids. Yes, sir. Metals exist as a crystalline solids. Hmm. And in which type of crystals they are present?
Sir, they are mostly in the form of crystal structure. Yes, crystal structure. Sir, right now I'm unable to recall. Which is a better reducing agents in a periodic table? Reducing agents, metals are good reducing agents because they have low ionization enthalpy, so they can easily Metals are release one electron. present all around the periodic table. Yes, sir. Which metals are most reducing? Most reducing, Yes. cesium. Okay. In coordination compounds, cobalt form a two complexes, one in the coordination number 4 Yes, sir. and Cobalt another +4. in coordination number 6. Yes, sir. But in +6. coordination number 4, it forms a dark blue compound. But in Dark blue. coordination Okay. number 6, it forms a light pink. Okay. Why it is so? Sir, actually, the colors are basically due to the transition of electrons. Uh, Then KMnO4 is also colored compound. KMnO4, yes, sir, colored compound. Which type of transition it show? Sir, Mn is in +7 oxidation state. That is, it has D0 configuration. Okay. So it shows charge 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 transfer. How it happens? Charge transfers. Charge transfer. Sir, abhi What are electron deficient compounds? electron deficient compounds. Yes. Sir, according to octet rule, some of the molecules are formed without the completion of 8 electrons, like BH3. Okay. So they they combine with another molecule of BH3 to form diboron B2H6, so that Okay. Which type of bonds are present in the P2H6? so basically B2H6 has a special type of bond which is called a banana bond, in which the two B atom are present in a plane, in one plane, and the bridging hydrogen are above the plane, so it resembles something like kind of banana shape. Okay. How we can estimate the hardness of the water? Okay. Hardness of water is basically due to the presence of salts of calcium and magnesium, like calcium chloride and sulfate. Okay. Then how we can So estimate it? there are various methods to estimate the hardness of water. Uh, uh, mm, Something like, there are some methods to remove the hardness of water. Uh, Okay. What are synergistic bonds? Synergistic bonds. Synergistic bonds. Yes. Yes, sir. Synergistic bonds. Sir, uh, when we see the compounds of carbonyl compounds, metal carbonyl Okay. compounds, so in that uh, in that we can see that so basically it happens that if one atom is giving electron, and other atom is also like
Okay, there is a one famous catalyst which is used for the hydrogenation of alkenes. Okay. Can you tell me that catalyst? Hydrogenation of alkene. Yes. Rainy nickel or Rainy nickel is a very common catalyst. Lindlar's catalyst. Okay. What is Ziegler-Natta catalyst? Okay, Ziegler-Natta catalyst is a catalyst which converts low density polythene to high density polythene, which is aluminum titanium, Yes. aluminum trichloride ऐसे Al TiAl Cl3 ऐसे टाइप का कुछ है. So what are quantum numbers? Quantum numbers are the numbers which specify the position of electron inside an orbital in an atom. There are 4 types of quantum numbers: principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, spin quantum number. Okay, suppose you are giving any unknown compound. Yes, and sir. you have to quantitative analyze it. For which Quantitative spectroscopic? analysis. Okay. Yes. For which type of spectroscopic techniques will you start with? I have to quantitatively only analyze. Quantitative analysis only. Qualitative. Tell me about qualitative. Okay. Okay. So, sir, if I do the IR studies on that atom or compound, so Okay. I can get to know the peaks that functional groups that are present in that compound. If there are some like standard values like 3600 will give OH peak, Okay. 1700 carbonyl peak, so that way we can probably tell the functional groups that are present. Okay. And if What about the metal oxygen peak? metal oxygen peak, Yes. What will be the range of it? sir, I don't have, like I have to read about it. Okay. And this is the first technique. Then after IR, what will you prefer? Sir, after IR, I like, if I have very less sample, like I cannot afford to like lose it, so I will go with रमन कर सकते हैं उसको. रमन क्या बताएगा? सर रमन अगर मतलब यूवी में अगर मतलब यूवी तो आपने किया नहीं, फिर रमन कैसे चले जाओगे? आप कह रहे हो यूवी में अगर सर का डाइपोल मोमेंट 0 रहेगा कंपाउंड का, तो वो रमन में हो जाएगा. अगर जैसे कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट 0 है तो रमन में वो एक्टिव हो जाएगा. यूवी में एक्टिव नहीं होगा? नो सर. यूवी में कौन सी ट्रांजिशंस होती है? यूवी में सर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस होती हैं. जैसे ये सर सिग्मा टू पाई स्टार, नहीं एन टू पाई स्टार. नॉन पोलर कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते क्या? The electrons are not present in non-polar compounds. नॉन पोलर में होते हैं सर. यस सर. Then why it cannot show UV? Okay, any another energy levels excluding electronic energy levels which are present in the molecule? Yes sir, inside the electronic level we have vibrational level,
Then we have rotational level inside, like. And if we have to do the rotational transitions, then which Yes, type of sir. electromagnetic radiation should we use? So for rotational transition, we can use microwave. Microwaves. And Yes, sir. for vibrational? Sir, for vibrational, we use infrared, IR. What is the selection for the rotational transitions? Selection Selection rules? rules. Yes, sir. Selection rules, delta L should be plus minus 1. Like the transition should be from N level to N plus 1 level. And in rotational. And what about vibrational? Sir, vibrational में भी वही delta L plus minus 1 selection. दोनों में सेम रहता है. वाइब्रेशनल में अगर +2 ट्रांजिशंस हो रही हैं तो उसको एन हार्मोनिक बोलेंगे सर. एन हार्मोनिक बोलेंगे. उस ट्रांजिशन को कोई नाम भी दिया गया है? हॉट बैंड्स, उसको हॉट बैंड्स कहते हैं. हॉट बैंड्स कहते हैं. यस सर. वो बेटा क्रोमोफोर्स क्या होते हैं? सर, chromophores are the functional groups that gives color to the compound in a sample. In a sample. Can you give me some examples? For chromophores? Yes. Yes sir. For example, OH is a chromophore. NH2. OH, but alcohols are not colored. Methanol is a colorless substance. Ethanol is a colorless substance. If OH provide colors, then why ethanol is colorless? सर वो ट्रांजिशन जब होता है तब वो मतलब कलर देता है. ऐसे इथेनॉल तो कलरलेस ही होता है. नहीं, अकेले अगर OH अकेला है तब ट्रांजिशन शो करेगा, इथेनॉल में नहीं शो करेगा. सर इथेनॉल में तो नहीं करता है. जब हम यूवी जब लाइट उस पे व्हेन वी इरेडिएट यूवी लाइट, सो इट शोज, तभी वो कलर शो करेगा. हाँ, तब वो क्रोमोफोर रहता है सर. नहीं, आपने जो जैकेट डाली हुई है इसमें कलर, अगर अब इसमें यूवी लाइट अगर हम बंद कर देंगे तो ये ब्लैक कलर की नहीं दिखाई देगी अगर हम नो सर. ट्यूबलाइट सर बंद फॉर, कर देते. हाँ हाँ, मतलब देखने के लिए तो सर लाइट रिफ्लेक्ट होके आना चाहिए ना हमारे पास. ओके ओके, ठीक है. चलो ये बताओ मेरे को, अगर हमने मेटल्स किसी भी सैंपल में प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट, तो कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक के लिए हम जा सकते हैं? मेटल के लिए? हाँ जी. If we have to find the amount of a metal present as a substance. सर मेटल के लिए तो सर ऐसा नहीं होता, ये फाइंड नहीं कर सकते हम? कर सकते हैं सर. कर सकते हैं. हम्म. ठीक है, वही पूछ रहा हूँ मैं, कैसे कर सकते हैं. फ्लोरेसेंट मटेरियल्स क्या होते हैं? फ्लोरोसेंट मटेरियल्स सर जो लाइक दैट एब्जॉर्ब लाइट्स एंड एमिट, जैसे कि रोडामिन बी, टीएचटी. What is this rhodamine? So it is a fluorescent dye. फ्लोरेसेंट डाइज. ओके, डाइज में कौन से ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जिस करके वो कलर शो करते हैं? कोई स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं जो डाइज में प्रेजेंट होते हैं? उसमें बहुत सारे मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि OH वगैरह.
Okay. चलो, okay, fine, Nidhi. Now I am giving Yes. the feedback of your interview. Yes, sir. Interview, it was good, ठीक है, but Okay. not very good. Yes, sir. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपने गलत दिए, ठीक है। विद इन द इंटरव्यूज Yes, मैं sir. वो नहीं बताता हूँ, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत थे आपके, ठीक है। विद इन द इंटरव्यूज वो कभी भी इंटरव्यूअर आपको नहीं बताएगा कि आप ये गलत बोल रहे हो। तो सर मतलब जैसे गलत भी बोलूंगी तो ऐसे सुनते रहेंगे बस? मतलब अगर आपने कुछ गलत बोला है तो उससे हाँ। आगे वो क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको, आपने कहा कि जो हाइब्रिडाइजेशन के बेस्ड थ्योरी, आपने कहा VSCPR है, ठीक है। VSCPR इज नॉट बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन। सर तो कौन सा VBT था? VBT थ्योरी है वो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज बेस्ड ऑन द, सच बैलेंस बॉन्ड। ठीक है। यस सर, यस भी सर। मैंने उसकी आपसे फुल फॉर्म पूछी थी, पर फिर भी आपने नहीं पकड़ा उसको, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था उसमें तो। ठीक है। Lanthanoids, they exist as a oxide in the earth crust. Hello, can you hear me? हेलो हेलो। हेलो, सर हाँ जी बच्चे, डिस्टरबेंस आपकी तरफ से कुछ वॉइस में। नहीं सर, थोड़ा नेटवर्क इशू था, अभी ठीक है। ओके, मैं कह रहा था कि lanthanide को रेयर अर्थ एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दे एग्जिस्ट एज ऑक्साइड्स इन द अर्थ क्रस्ट, ऑक्साइड whereas, एज अर्थ, ठीक है। हाँ, whereas other metals exist in the different salts, sulfates or nitrates, but lanthanides generally exist as oxides, so they are called as rare earth metals. ओके। सिलेक्शन रूल्स जो आपने मेरे को बताए वो गलत है। आपके रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सिलेक्शन रूल्स होते हैं, दैट इज डेल्टा J इज इक्वल टू 0 and ±1, अच्छा। ठीक है। वाइब्रेशनल के आपने ठीक बताए थे, और जो आपने वो बताया था मेरे को 0 to 2, दैट आर कॉल्ड एज ओवरटोन्स, उसको हम क्या कहते हैं? ओवरटोन्स, अच्छा। ओवरटोन्स कहते हैं हम उसको, ठीक है। यस सर। कोऑर्डिनेशन के आपने जो क्वेश्चन पूछा था मैंने कोबाल्ट का, ठीक है, वो भी हाँ, आपने, कोबाल्ट वाला हाँ वो नहीं भी बताया आपने था। गलत बताया था, बताया नहीं था वो आपने, ठीक है। वो क्या होता है कि इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 उनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, दे आर नॉट सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, सो वो क्या, वो लपोटे फॉरबिडन अलाउड ट्रांजिशंस होती हैं, वो ट्रांजिशंस होती है लपोटे अलाउड, लपोटे अलाउड होने ड्यू टू हाईली, सर थोड़ी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, ये सीओ कोबाल्ट +4 वाला का क्या है? हाँ जी, उसका था कि उनमें जो ट्रांजिशंस है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, दैट आर लपोटे अलाउड, so that's why they are intense, but in coordination number 6 वो लेपोटे forbidden transitions होती हैं, अच्छा, ये फॉरबिडन होती है, ओके सर। तो इस करके वो लाइट पिंक कलर शो करते हैं हमारे पास। तो जितना भी मतलब इंटेंस कलर होगा वो अलाउड वाले होंगे, लपोटे हाँ, अलाउड वाले? हाँ जी, लेपो ऐसे और भी रूल्स होते हैं बच्चे, स्पिन अलाउड, ठीक है, स्पिन अलाउड, लेपोटे अलाउड, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर अलाउड। अगर वो सारे ही अलाउड हैं तो इंटेंस होंगी, अगर फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं देन इट विल नॉट बी इंटेंस ट्रांजिशंस, ठीक है सर, ओके सर। ठीक है। और एस्टिमेशन ऑफ वाटर बच्चे हम ईडीटी के साथ कर सकते हैं, ईडीटी के साथ हम कैल्शियम और मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स बना के बाय डूइंग द वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस वी कैन एस्टिमेट द हार्डनेस ऑफ द वाटर। यस सर, ये सब पढ़ा नहीं है एक्चुअली। ओके। मेटल ऑक्सीजन का पीक बच्चे वो आता है आपका अराउंड 400 to 600। 400 to 600 किस वाले 600 करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में? ये आप आईआर में ही कर सकते हो बच्चे, आईआर में, ओके। ठीक है। आईआर में अगर आपके पास 400 to 6 या 700 तक पीक आ रहे हैं, देन इट मे बी ऑफ द मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड्स, बिकॉज यूवी और विजिबल, यूवी और आईआर में तो सिर्फ हम मे बी से ही बात करते हैं, ठीक है। उनको कंफर्म फिर नेक्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स में हम जाके करते हैं, ठीक है। आईआर के पीक्स जो फंक्शनल ग्रुप्स मेन मेन है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमीन्स, अल्कोहल्स, मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड्स,
ये पीक रेंजेस आपको पता होनी चाहिए बच्चे। ठीक है, फिजिकल इंटरेक्शंस बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था मैंने, आपने बस पूछने का वे डिफरेंट था। जितनी भी आपकी डायपोल 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 इंटरेक्शंस हैं, ठीक है, लंदन इंटरेक्शंस, डायपोल, इंड्यूस डायपोल, ये सारी फिजिकल इंटरेक्शंस ही हैं। ये सारे जो भी मतलब कि आयन 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 ये सब वैंडर आयन, वॉल वाले। हाँ जहाँ पे, हाँ बॉन्ड, जहाँ पे बॉन्ड्स नहीं फॉर्म हो रहे, वो सारी इंटरेक्शंस कौन सी हैं? फिजिकल इंटरेक्शन। जहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कोवलेंट, सो ये कोऑर्डिनेट। मुझे समझ नहीं आया ये एक्चुअली क्वेश्चन। हाँ मैं हाँ। आपको पूछ रहा हूँ कि आप क्वेश्चन तक पहुंच नहीं पाए। ठीक है, सिनर्जिस्टिक बॉन्ड्स के बारे में आपने अच्छी तरह नहीं बताया मेरे को। ठीक है, सिनर्जिस्टिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बोनल्स। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक इंटरेक्शन तो होती है जब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में देता है। मेटल के दूसरी, वैकेंट में। हाँ। हाँ दूसरी इंटरेक्शन तब होती है जब मेटल अपने फिल्ड डी ऑर्बिटल से कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग वेकेंट में देता है। तो ये दो इंटरेक्शंस हो रही हैं बिटवीन कार्बोनिल एंड मेटल एंड कार्बोनिल। सच टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर कॉल्ड एज सिनर्जिस्टिक इंटरेक्शंस, जिनको सिनर्जिस्टिक बॉन्ड्स कहते ठीक है। हैं। ठीक है, मेटल्स की एनालिसिस के लिए हम बच्चे डबल एएस की तरफ जा सकते हैं, एटॉमिक अच्छा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एएस। ओके। इसके इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ लेना, इसका प्रिंसिपल भी पढ़ लेना। तो जैसे कि मतलब अगर वाटर के अंदर जो आता है मेटल कंटामिनेशन होता है, मतलब मेरे स्टेट में होता है आर्सेनिक या कैडमियम, वो भी आप तो ढूंढ इससे सकते हो इससे। हाँ वो बता सकते हैं। बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है। ठीक है, और भी अब नोट कर लो, इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा फ्लेम फोटोमेटरी। क्या सर, एक क्या बताया आपने? इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंडक्टिव कपल्ड। प्लाज्मा हाँ। स्पेक्ट्रो, इसमें बस एएस और इंडक्टिव कपल्ड में ये होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, मेटल्स को आयोनाइज कराते हैं। तो आयोनाइज जो करवाने के तरीके हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं एएस में और इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा। ओके। जनरल प्रिंसिपल इनका सेम ही रहता है। ठीक है। ठीक है, थर्ड वन अनदर वाज फ्लेम फोटोमेटरी। फ्लेम। ओके, ये सही तो किया था मैंने। हाँ जी, ये वो जो किया था ना आपने। हाँ प्लैटिनम रॉड लिख के उसके मतलब डिफरेंट उसके, कलर्स आते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, हम्म। तो उस हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स के लिए हम वेलेंसन कैटलिस्ट यूज करते हैं, अच्छा। दैट इज ऑफ अ रोडियम। ओके। ठीक है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है डाई अल्काइल डाइक्लोरो टिटेनियम एल्यूमिनियम टिटेनियम। टिटेनियम का कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें दो टिटेनियम क्लोरीन होता और, है, हाँ। हाँ जी, ठीक है। हम्म। तो ऐसे मतलब ऐसे जो ये कैटलिस्ट हैं, इनके आपको फॉर्मूलेज और इनके नाम्स और इनकी कहाँ यूज होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखने ये सर जैसे कौन कौन से जिगलर नाटा एक हो गया और हैं। हाँ, ये वेलेंसन कैटलिस्ट हो गया। हम्म आप ऐसे करना, क्या कहते हैं, मेटालो ऑर्गेनो, क्या कहते हैं, जो ये आपके पास है, इनऑर्गेनिक में मेटालिक केमिस्ट्री ऑर्गेनो। होगी, हाँ हाँ हाँ। उसमें कैटलिस्ट हैं 5-6। ओके। वो आप कैटलिस्ट के नाम्स और वो कहाँ यूज हो रहे हैं वो देख लेना। ठीक है सर। ठीक है, हम्म चलो आप इतना प्रिपेयर करो और नेक्स्ट आगे प्रिपेयर करो, फिर हम लेते हैं आपका एक आधे दिन में दोबारा एक स्नैप। सर ये पढ़ने मतलब मैंने पढ़ा नहीं इसलिए नहीं मतलब गायब हो जा रहा है, जो थोड़ा बहुत याद है वो ही बस आ रहा है, ऐसा हो गया है। मैं तो उसको रिवाइज करना पड़ेगा।